अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ समीउल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। आए पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जो हमारे साथ है वो है प्रूफ दैट द वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is equal to area of parallelogram. पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है क्या। Let we have area of parallelogram here ABCD with 4 corners. Let we have an area of parallelogram with 4 adjacent sides. By definition of vector product, by vector products हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब in order to calculate the angle, so as to calculate the angle we draw perpendicular हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम डी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको ई का नाम देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम डी एंड ऑन लाइन ए बी such that DE is the height of area। ये अब ये ट्राइंगल लेते हैं, ये DE इन ट्राइंगल ये DE perpendicular upon hypotenuse is equal to perpendicular is equal to यह हमारे साथ h हो गया, हाइट हो गई, ये b होगी, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास h है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास b है, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। h इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 में हम b ऑफ साइन की जगह h यूज़ करते हैं। thus इक्वेशन 1 becomes a cross b is equal to a into h, where a is equal to base and h is equal to height. Height into base is equal to area of parallelogram, which is equal to area of parallelogram, which is equal to a cross b. Hence proved. एक्सपेक्टेड ऑल ये थी हमारे साथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइन करने का इक्वेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।